Hi everyone, you're watching Punjab Kesari Navade Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सुचदेव and today we have with us a bunch of talented actors of the industry who are gradually getting their due in Bollywood, I believe. Yes, I'm talking about Aisha Raza ma'am who is with us right now, Labita Thakur, Vivan Shah and Shiv Pandit. All of you welcome to Punjab Kesari Navade Times. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. मुझे लगता है अब तो मुझे भोपाल जाना पड़ेगा. I have never been to this place. It's fantastic. You must. It's lovely city, lovely city. Since it's all about relationships, जितना मैं जानती हूँ, अभी सिर्फ टीजर ही सामने आया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना रिलेटेबल रहा आप सबके लिए इसमें काम करना. मेरे ख्याल से अगर एक फैमिली की कहानी है, लोगों की कहानी है, माँ बहन भाई, ये रिश्ते तो हम सब जानते हैं, हम निभाते हैं, तो रिलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है. माहौल जरूर बदलता है. जिस मिलियू में हम शूट कर रहे हैं शायद वो हमारा खुद का मिलियू नहीं है, लेकिन इमोशन तो सेम ही रहता है. मतलब तो आप सब, हम सब ने शायद अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से हम गुजरे हैं जिसमें कभी दुख भी हुआ है, खुशी भी हुई है, एक दूसरे को उभारा भी है मुश्किल लम्हों में. तो मुझे लगता है सुतलियां तो सब रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा अपनी जिंदगी में. लबिता कितना खुद को जोड़ पाई फिल्म में काम करने के लिए? ऑब्वियसली कैरेक्टर बिल्कुल मेरे खुद के जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जुड़ पाई मैं. आई थिंक दैट्स व्हाट वी एक्टर्स डू एनीवे, बिकॉज वी हैव टू एम्पैथाइज विद आवर कैरेक्टर्स. और मुझे भी बहुत जैसे आयशा ने बोला वैसे ही कि ये सबकी घर की कहानी है. जैसे we all can relate to it because we all can relate to the love we have for our family, the disappointments we have with our family, the complaints we have, and how we will still just do anything and everything for our own people, for our family. So I think, yeah, I could totally relate to the character that way, in that sense. Very nice. विवान ने कौन से अपने चाइल्डहुड के डेज याद किए, like while working into the film? बहुत सारे. और कई बार जब एक एक्टर को शायद एक इमोशनल सीन करना पड़ता है तो अपने खुद के मेमोरीज से काफी ड्रॉ करना पड़ता है. और ये जो परिवार है हमारा इसमें बहुत ही अनोखा और अद्भुत सा है, जिसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खूब सारा प्यार है. बहुत ही it's a moving story. It's a very beautiful story about the bonds of family and about the things that can come in between the bonds of family. तो ये हमारा जो सब्जेक्ट, जो विषय है इस शो का, इस कहानी का, वो सब काफी इसे एक्सप्लोर करता है. Shiv, if I talk about relationships are sometimes complicated. What are your thoughts on that? I completely agree with you. I think relationships जब आप बाल की खाल उधेड़ते हैं, आई थिंक बाल की खाल और खाल की बाल की खाल. हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप्स भी कुछ इस प्रकार होती हैं, स्पेशली जो फैमिली की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें अगर आप एक लेवल के साथ डीपर जाते रहते हैं तो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, यू नो, देयर आर अनसेड थिंग्स. काफी हमारी जो हिंदुस्तानी जो हमारा सेटअप है परिवार का, वहां पे काफी बार लोग जो होते हैं अपनी चीजों को पी जाते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं. दैट इज व्हाई a lot of people, I would assume a lot of women, a lot of families must have been battling depression back in the day. मतलब back in the day. अब जाके ये डिप्रेशन और सेल्फ एनालिसिस, थेरेपिस्ट, एंजाइटी, ऐसे टॉपिक्स को लेके खुलेआम थोड़ी सी ओपनली बात की जाती है. हमारा 2022 में हमारा जो शो है वो कुछ उस प्रकार से इस टॉपिक्स पे टच करता है, जहां पे आपको दिखता है कि काफी बार कुछ चीजें होती हैं वो उनके बारे में डिस्कस करना भी बहुत दिक्कत हो जाती है, और कैसे फिर मतलब I it's very interesting actually. The more I'm talking about it, I'm enjoying the fact that I was part of Sutliyan. जी. आयशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, as an actor, what is your approach? Because we have seen you playing so many characters, और हम शुरू से आपको करता हुआ देख रहे हैं. मतलब what all like do you choose, or like do you keep in mind while selecting your roles? मेरे ख्याल से ये रोल थोड़ा सा, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि औरतों को बहुत जल्दी बड़े रोल्स में कास्ट करने लगते हैं. दादी माँ सब मतलब 40+ में आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं बॉलीवुड के लिए. तो मेरे लिए ये जरूरी था, क्योंकि
एक मौका मिल रहा था एज एन एक्टर कि आप एक ओल्डर औरत की कहानी बता सकें, एक एज वैसे एक स्मॉल टाउन में एक औरत है, वो कोविड से कैसे उसकी जिंदगी पे असर हुआ है, उसके बच्चों से उसके रिश्ते कैसे टूटे हैं फिर जुड़ते हैं। तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज मुझे मौका मिल रहा था एज एन एक्टर टू डू अ बिगर रोल ऑल्सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू शो अ ग्राफ इन द कैरेक्टर. And I think with such a talented bunch of people with me, the journey was incredible. And मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फिर इस चीज को हाँ कही, बनिस्बत इसके के थोड़ा सा उम्र में ज्यादा, कैरेक्टर की उम्र ज्यादा है. yes, बट मुझे उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं है. मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत अच्छे शो का हिस्सा बनने का मौका मिला और इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला, तो इट मेड अप फॉर ऑल ऑफ दैट. वेरी नाइस. लबिता, अगर मैं आपकी बात करती हूँ, आफ्टर यू डिड बॉम्बे बेगम्स, यू थिंक नाउ यू हैव गॉट योर ड्यू इन लाइक द industry? That's true. I don't know if I would think of it like getting my due or not, because honestly, I don't think so much in life. I just like working. I love being on sets. I love acting. So, and any nice script I get, and I do feel I've been extremely fortunate to have got really amazing script to work on, and really different characters every time. So I'm also excited about the ones that are upcoming, and of course really excited about Supriya. I would like to think that I got my due because of Bobby Begums and the way OTT has come up with like so many. The good part about OTT is that there's a lot of work happening for everybody, for actors, for filmmakers, for writers. I think it's really good. We have like we have a platform for everybody to continuously be working, at least. Yeah, definitely, you said it absolutely right. Vivan, if I ask you, like, do you take advices from mom and dad, Naseer sir and Ratna ma'am, before signing any project? Yes, certainly. Okay. Not like before signing or anything like that, but just the discussion of the project or the character always happens at home, and I always ask them what they think of it and whatnot, and there's always a discussion about that. What do you think you've got as legacy from them? I feel I've got my education from them. I feel that everything I know, everything I learned, that I've got from them. You know, it's like having an institution at home, and a wisdom, or a sort of well of wisdom and of knowledge that you can draw from. And I'm blessed. I'm really fortunate that to have this. You know, a lot of people talk about, how does it feel to live under their shadow? There's a great quote from BKS Iyengar's daughter, who said that I don't live under his shadow, I live under his light. That's the same thing I would say. Is that I don't Here. I don't live under their shadow, I live under their light. So I'm constantly illuminated by their light. Yeah. You know, I just love hearing Vivan talk, Namita, because I think Vivan is such a well-read, but more importantly, Vivan is such an interesting guy. I genuinely am Vivan's fan. No, I genuinely really enjoy speaking to Vivan. Just last night we were talking about how we're going to bunk a few things. And okay, well, that's nice, yeah. But drawing analogies from the Three Musketeers. Oh God! But yeah, Vivan is a very interesting. When you get to know Vivan, you really enjoy him. Well, Shiv, if I ask you, like, you have done so much work, इतना ज़्यादा काम करने के बाद में, वो तो मैं पूछूंगी, but then anchoring आपने किया, acting आप कर रहे हो, web series, films, television, short films, everything, है ना? So which space are you enjoying the most? You know, I'm just enjoying the space of being on set and working, and I'm very happy कि मुझे regularly touchwood, you know, I'm getting work and I'm getting an opportunity to show my work and getting to learn. Because I जब मैं industry में आया था, I did not have any, you know, what do you call, any formal education in acting. मतलब I'd done a lot of theatre. बट जो टेक्निकलिटीज होती हैं हमारे क्राफ्ट की, वो मैंने सारा काम कर करके सीखा है. आज भी होता है क्या, व्हेन यू वर्क विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, उनका एक अलग नजरिया होता है, कैसे आपको यू नो हाउ टू डिलीवर द लाइंस, और हाउ व्हाट स्ट्रेसेस टू टेक, और हाउ शुड यू एक्ट. And the beauty of this craft and this profession is sometimes with the right ingredients and the right person guiding you,
वो आप ही को आपके परफॉर्मेंसेस या आपके टैलेंट के बारे में कुछ नई नई चीजें सिखा देते हैं. You know, so you get to see a facet of your side, of yourself, which you didn't know existed. Yeah. So I'm very happy and grateful to be, in fact, I'm very happy to be working. So it doesn't matter what format I'm working in. Correct. As long as I'm doing interesting work and audience के साथ साथ अगर मुझे भी बड़ा मजा आए वो काम करने में, तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली यू सेड. अच्छा, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आती है. हम जितने भी, मतलब हम एक्टर्स, मैं बोल पड़ी, वैसे जितने भी एक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनके बेस्ट क्रिटिक या तो वो खुद होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स होते हैं. तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिले खुद में एक चीज चेंज करने का एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन, है ना, क्योंकि जब हम खुद को देखते हैं लगता है यार ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए था, तो वो क्या होगा? मैं आप सबसे ही जानना चाहूंगी. लाइक स्टार्टिंग विद लेडीज फर्स्ट. आयशा मैम. आयशा मैम से पूछना मतलब बेमानी सा ये सवाल, बिकॉज शी मेक्स इट सो एफर्टलेस ऑन स्क्रीन. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? आई वांटेड टू नो. I think मेरे लिए जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही because I grew up on the quote unquote healthier side, a chubby kid, always was acting, but I think मेरे teenage years में एक self consciousness आ गई थी body को लेके, face shape को लेके. मैं बॉम्बे भी आई तो मुझे 26 की उम्र में भी सीधा बुआ जी and माता जी was offered to me even at 26. Which is when for a good long time, I left screen acting. I did voiceovers. I did lots of other things to earn money, which didn't require me to be on camera, but I did my theater. And वहां से मुझे जो एक सीख मिली कि how to let go, how to be free, how to not bother about ये मेरा डबल चिन दिख रहा है कि ये मेरा ये ऐसे बैठो. If it's real, if it feels organic, उसको करो. आपका डायरेक्टर खुद ही बोल देगा कि मैम कैमरे पे ऐसी टांग करके मत बैठिए, for the camera it's not looking good. But I need to be able to let go in a way which frees me. So I think as an actor, my challenge is freedom. And the more freer I get and the more happier I am with myself as a person, I think that will reflect to me in my performance. So letting go, like I remember Dil Dhadakne Do ka jab gaana aaya tha, and when I'm not a dancer, but and nobody was, 25 of us were not dancers except your lead characters. And when I danced, and everybody was not worried about my acting. They were like, "Tumne kaise kar diya?" Because I cannot get up in a small group of people and dance in the center of a crowd in the house. I can't do that. So for me to be able to do that on screen was a big breakthrough that I just like said, "Chalo, hell with it. Kaise bhi lago." You know, really that's very important to free myself. And as and when I keep looking at my work, I keep thinking, नहीं इसको और easy कर सकते हैं, इसको और relax कर सकते हैं, इसमें इतना effort लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है. तो वो धीरे-धीरे as an actor you keep learning. Absolutely, ma'am. Same question goes to Plavita. If there is a chance to change one thing about you, then what it would be on screen? I don't think I want to change anything about me. Wow, I really sound very narcissistic. Maybe I am. I just don't think I need to change anything about me because I am me, because of my experiences, because of my smile is probably because of my how happy I am and my genetics, whatever, my mom and dad, whatever I got. I don't think I particularly want to change anything about myself on screen. And of course, like Aisha said, I did actually, for a long time, I was always obsessed with my double chin and my tummy. And I'm like, oh my God, my double chin and my face looks fat, my face looks fat. Every girl is concerned about that. Right? And I was like that for a long time. And then eventually I realized that when I'm watching somebody else, even if they do have a double chin and they are, they will tell me how conscious they are about it. But when I look at them, you don't see double chin is not the first thing I look at. And that's not what I notice. That's when I figured that, the same way, people are not going to notice my double chin the first thing. Exactly. And ever since I thought about that, going on saying chin, you're going on saying chin, chin, chin. I'm reminded of that, Vivan, what's that story? What's that children's story where it says, my chinny chin chin? That's the big bad wolf. Three little pigs. Three little pigs. I will rub it on my chinny chin chin. What, something no, like that? Little pig, won't you let me in? Not by the hair of my chinny chin chin. Oh, wow. Everyone think chin, chin, chin. All I could imagine was chinny chin chin. Yeah. But girls are imagining that double chin. Is what I wanted to get rid of earlier, and now I've made peace with it. So now I'm like, okay.
अच्छा, वैसे मैं शेरशाह में अगर बात करूँ ना तो मेरा ध्यान सिद्धार्थ से हटके शिव पे ज्यादा था, मुझे इतने हैंडसम लग रहे थे। आज भी मुझे अक्षिता ने मतलब लाइक द पियर सेड कि यार 5 मिनट लेट हो रहा है, शिव ने ज्वाइन नहीं किया, हम उनका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो माफ किया, कोई बात नहीं, क्योंकि शिव के लिए बोल रहे, बिकॉज आई लाइक शिव सो मच ऑन स्क्रीन, इज सो हैंडसम, beaming from ear to ear. So you are my new crush right now. Thank you so much. How That's so nice. sweet. That's so sweet. You know, Shersha was such a special film, and you know, Sid is a really good friend of mine, and I gotta say that working on that film has been a real life-changing experience, and I'm very happy. I'm assuming कि आपको film पसंद आई थी, and I'm glad. I'm so happy. Thank you. I'll take the compliment very wholeheartedly कि आपको मेरा काम उसमें पसंद आया. Thank you so much. आप ज्यादा. Thank you. वेल विवान, जब आप खुद को स्क्रीन पे देखते हो तो क्या मतलब बदलने नहीं पूछना चाहिए ना आपसे, वैसे क्या बदलना चाहोगे? एक चीज बहुत जरूर एक चीज है, the speed at which I speak. I find that one big flaw I have as an actor is that I tend to talk very fast. Sometimes I tend to deliver the dialogues too quickly, too fast. So that is one thing that I always, जब भी मैं अपने आप को खुद को देखता हूँ फिल्म में या शो में, तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये लाइन बहुत ज्यादा तेजी से बोल दिया मैं, अगर वापस जा सकता था तो मैं थोड़ा सा ठहराव के साथ या थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता उसको। तो ये एक जरूर चीज है, एक समस्या है मेरी एक्टिंग के साथ कि कभी कभार मैं ज्यादा तेज बोल देता हूँ डायलॉग को। ओके, वेल शिव, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे एक्टर्स कॉन्शियस रहते हैं अपनी लुक्स को लेकर ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, Absolutely. तो उसको लेकर कभी रहा है कि डायरेक्टर से बोला हो कि ये एंगल ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ले? You know, the thing is कि मेरी तो चाहत ये रहती है कि मैं जितने बड़े दिग्गज टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करूं। तो कुछ समय पहले, ऑफ कोर्स विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, कुछ समय पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, कुछ एक्टर्स हैं सेट पे जो या तो वो अपने आप ही एक तरीके से बैठ जाते हैं ताकि उनके वो एक सर्टेन एंगल्स में वो लिया जाए, या फिर वो डायरेक्टर्स या डीओपी को रिक्वेस्ट करके अपने लिए लाइटिंग उस हिसाब से करवाते हैं। बट यू नो व्हाट आई फिगर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, नमिता, एंड आई थिंक दिस इज माय वे ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टू माय कैप्टन ऑफ द शिप, या जो मेरे डायरेक्टर हैं, इज दैट अगर मैं अपना ट्रस्ट उनमें रख रहा हूँ कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप प्लीज आप मेरे में से अच्छा सा मुझ में से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल, I think it's my responsibility then to give him a free hand. Yeah. Who am I to tell him, sir, आप ये एंगल से लीजिए या आप ये बिल्कुल। एंड अगर एक्टर को अपने बालों की, अपने कपड़ों की फिक्र है, यू मस्ट अंडरस्टैंड एक डायरेक्टर जो है उसको सारी चीजों की फिक्र है। Exactly. उसके लिए तो फिल्म उसका बच्चा है। Absolutely. And the person who used to really tell me this a lot is my director, who I'm such a fan of, is Vishnu Vardhan, who's the director of Irsha. He used to say, you guys, you're always focused on, what you guys are looking like, this and that. He says, I have to get action, this, that. So don't worry, it's my responsibility to make you guys look good. You look good. Absolutely. And so in fact, on Sutliya also, I'm summarizing what I'm saying. None of us, neither Aisha, Vivan या प्लबिता या मैं, हम लोग मॉनिटर नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये इतना फ्रीइंग होता है, बिकॉज आप शॉट देते हो, फिर आपका ध्यान उस शॉट में रहता है, या शॉट के अंदर अगर आयशा के साथ तो हर टेक बहुत ही बेहतरीन होता है, बिकॉज आयशा इज अ टेरिफिक एक्ट्रेस। तो उस वक्त क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग विद आयशा, तो हर 2-3 दिस इज ट्रू वैसे, है ना, तो हर 2-3 टेक्स में वो परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। लेकिन अगर मैं हर टेक के बाद जाके अपने आप को मॉनिटर में देखता हूं ना, तो मैं अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कॉन्शियस हो जाऊंगा। सो इट्स वेरी फ्रीइंग, एंड नीदर डज प्लबिता वॉच द मॉनिटर, नीदर डज विवान, ऑल थ्री ऑफ them. That's why we used to. Actually, I didn't realize this until you said it, because वहां पे क्योंकि हम सभी नहीं देख रहे थे, तो we were not conscious के मॉनिटर। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वाकई हम में से किसी ने मॉनिटर जाके नहीं देखा। शॉट होता था, पता नहीं कुछ अपनी मस्ती वस्ती चालू होती थी, चैटिंग वैटिंग, उसके बाद somehow दूसरा शॉट हो जाता था, बट nobody was very interested in going and checking out the monitor. So like my scenes with the siblings, Vivan and Plabita के साथ, I personally feel वो इतने real और organic आए, because both of them were terrific in what they were doing. Plabita के साथ जो मेरी एक relationship जो उसने develop की, वो बहुत बढ़िया निकल के आई। विवान और मेरी जो एक brother, दोनों भाइयों की relationship है, because मैं उसको face value पे उससे react कर रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था, सोच रहा था कि monitor में मैं कैसा दिख रहा हूँगा या किस तरीके से मुझे खड़ा होना चाहिए। वो in the moment
Plabita, मैं और विवान एक दूसरे के साथ, we were playing off each other and feeding off each other's energy. So I think it's very freeing to not see the monitor. Yeah, and which is very important, I think, for an actor. Yeah. Yeah. No, what you're saying is very important, Shiv. That's a very important point. Is that when actors tell the DOP or director, please, mera ye angle se lo, ya please aisa hi, ye sab falana dimkana, they don't realize what a bad thing that is for the filmmaking, for the point of view of the filmmaking. You're just restricting your filmmaker's eye so much. Why would you want to do that? Yeah. It's such a terrible habit. I think actors should really dispense with that, because you're being unkind to your filmmaker by saying that, because you're not giving him that visual flexibility which he needs as a filmmaker. He can't go by ki aapko sirf ye angle se acha lagta hai. Usko, he should have the freedom to shoot what's good for the film, not what's good for your vanity. I also he's having a better eye on you, I believe. Yeah. I feel that it is if we do that we want to look good in every frame. I think that is also silly of us to want as actors, because we are playing real people, and real people don't need to look good or exactly at all times. It is really okay to look bad. It is really okay to look ugly at some time, just And because nobody is perfect now in terms of anything. Yeah, we're not modeling Exactly. for something, where ad. we're promoting something which is good looking. So I feel it's really okay to just look just average or bad or ugly or anything, depending on what the mood is or what the character is. But what you might think is ugly might be beautiful to somebody else. Yeah, absolutely. And nobody looks ugly. Everyone is beautiful in their own style. Absolutely. So thank you so much, all of you, for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times. It's Thank you such so much. wonderful conversation. Thank you so much. Wonderful Pleasure. talking to you, Thank you. Amita. Pleasure is all Nice ours. talking Take care. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care.